Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 34, Development Planning and Change of Society in India. So topic to be covered are link between development planning and change, perception of social thinker on development and change, contemporary view of development planning and change, development planning and change in Indian context. So सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज हुआ, डेवलपमेंट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है और चेंज किस टाइप से होता है। जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, इज अ वैल्यू लैंडेड कॉन्सेप्ट। सोशल चेंज रेफर्स टू अल्टरेशन दैट अकर्स इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल रिलेशन। सबसे पहले जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट को हिंदी में कहा जाए तो तरक्की, डेवलप करना, कुछ उन्नति करना, कुछ उन्नत करना। फाइन प्लानिंग, उसके लिए कुछ प्लान करना। प्लानिंग सिंपली मीन्स अरेंजमेंट। फाइन, उसके बाद चेंजेस एज पर जो टाइमिंग आती रहती है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। लाइक टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है। वो सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ जाता है। सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इन Sociology, development essentially refers to a process of social change which is planned and desired by a society. देखिए डेवलपमेंट क्या है, जो चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है गांव के अंदर। डेवलपमेंट का मतलब है वहां पे पर्टिकुलर उस एरिया में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, प्लस वहां के लोगों की मेंटेलिटी में चेंज आ रहे हैं, वहां पे सोशल चेंज आ रहे हैं, जो क्या है गवर्नमेंट द्वारा प्लान्ड होता है और हमारे टाइम की रिक्वायरमेंट भी होती है। डेवलपमेंट इज अ वैल्यू लैंडन concept. Social change refers to alteration that occurs in social structure and social relations. In the early sociological writing, the term and nation of development and change are used interchangeably. A clear distinction could either not to made, or if made, they are treated as logically treated terms. In the mid 20th century, the term change and development are primarily viewed in context of modernization. देखिए पहले जो हमारे पास चेंज और डेवलपमेंट की बात करते थे या आज की भी हम लोग बात करते हैं, इट्स अ टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो हमारे पास मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। डेवलपमेंट एंड चेंज एज इंटीग्रेबल एंड लॉजिकली रिलेटेड टर्म्स। कौन कौन सी लॉजिकली रिलेटेड टर्म्स हैं? ऑगस्टे, हार्वर्ड, इमली, मैक्स वेबर एंड कर्नल मार्क्स। इन्होंने अपने अपनी डेफिनेशन दी। हर कोई जो भी सोशलिस्ट आता है उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। वेल्बर्ट मोरे क्या बोलते हैं? अंडरस्टूड सोशल चेंज एज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल और प्री मॉडर्न society into a technological dependent social organization. बेसिकली जो वेब है वो बोलते हैं जो ये सोशल चेंज आ रहा है ये बेसिकली हमें ट्रेडिशनल लुक से हमें मॉडर्न लुक की तरफ लेके जा रहा है। ये जस्ट बिकॉज और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बनाता जा रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। डेविड बोलते हैं लाइक मैक्स वेबर एम्फसाइज दैट इंटरनल फैक्टर्स लाइक वैल्यू एंड motives of a person provide opportunity to shape their own destiny. Cities of modernization theory. A.G. Frank opined that the modernization theories are inadequate from policy point of view because they fail to define correctly the kind of social and economical processes at work in the development countries. Rejecting the Western model of development, he asserted that it is not necessary that development would occur in all societies if they adopt the economic policies and parliamentary democracy on the pattern of West.
Now, in the mid 20th century, development was used in context of modernization theory. देखिए, जैसे हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोग 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट हुई उसको मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ा गया, क्योंकि उस टाइम के साथ साथ की वो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के साथ हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्री के साथ हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो सोशल चेंज में एजुकेटेड पीपल की रिक्वायरमेंट हुई। सो वो सारे चेंज किस वजह से आए, मॉडर्नाइजेशन की वजह से आने लगे। सो क्लियर डिस्टिंक्शन कुड ईदर नोट टू मेड और इफ made they are treated as logically related terms. In general level of abstracts, idea and words does not always have a clearly defined meaning. In this situation, it is important not only to define the terms precisely but also see how they are defined in different periods of time so that they can understood by a large number of people. Now, development are defined in Oxford English Dictionary. Development means gradual unfolding, a fuller working out of details of anything, the growth of what in the germ. देखिए, डेवलपमेंट को हम इंग्लिश डिक्शनरी के साथ जोड़ते हैं तो डिफरेंट मीनिंग आए। कुछ कहते हैं जो ग्रेजुअली अनफोल्डिंगनेस हो रही है वो डेवलपमेंट है, कुछ लोग बोलते हैं जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ हो रही है दैट इज डेवलपमेंट। बेसिकली डेवलपमेंट क्या है, कुछ नेसेसिटी चेंज जो हो रहा है। सो डेवलपमेंट inevitably means different things for different individual and social group. So due to different assumption made about the nature of development process, various words are frequently used to describe the process. So the term development has been used to make a distinction between prospects, industrial, prosperous industrial societies versus the rest of societies, and also describe the process of industrialization and मॉडर्नाइजेशन। देखिए, जैसे हम लोगों ने बात की 20th सेंचुरी के बीच में देखा गया कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोसाइटी में चेंज आ रहा है, डेवलपमेंट आ रही है। सो देयर कैन बी अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोस्पेक्टस industrial society and rest of the society. So three types of mainly used indicate the stage of development: traditional societies, ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। सो जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड प्रोसेस। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन भी आई और जो उससे ग्रोथ होने लगी। सो दीज थ्री आर रिलेटेड टर्म्स। So increasing urbanization and rising number of factories and movement of goods and labor from rural area to urban area are inevitable consequences of these process। देखिए, हम लोग इसको जनरल टर्म्स में मिलेंगे तो टाइम की रिक्वायरमेंट थी, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट हुई, लेबर्स की, लेबर्स से क्या हुआ, जो गांव के लोग थे वो शहरों की तरफ अप्रोच करने लगे। सो उससे अर्बनाइजेशन आया और उससे डेवलपमेंट आई। So, in these, a contradiction is said to exist between the forces of production as such technology, technical knowledge and crafts and their relationship with production like legal agreements, social organization, form of contract, form of distribution, etc. Planned change in economic, social, political and another spheres has been more recently defined as development. Now, development as socio-cultural development. So, since the 1960s, there is an increasing emphasis by socialists to look at development from a holistic point of view. This means defining development not only in terms of industrialization or economic dimension but also in terms of socio-cultural dimension. So देखिए, अब जो हमारे पास डेवलपमेंट हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रही थी, बट उनका कहीं ना कहीं हमारे सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ने लगा। सो एन इम्प्रूवमेंट इन द मोरल क्वांटिटी ऑफ लाइफ मीन्स developing a concern from others and not merely a concern for self. Thus, the
sociological approach to development look at this process as alternation with effect of whole socio-cultural matrix of society. Development has become to mean a planned simulative movement of all sectors of our social system in the direction of overall desired goals set by the society. Now planning की बात करते हैं. So in the present century there have several attempts to bring about social change by planning effort. Planning has become an important factor in social change. Change results from simultaneous decisions on many aspects and usually cause mixed positive and negative impact. Planned change or development may be defined as transformation that aims to minimize the negative impact on the society. देखिए प्लान चेंज की बात करते हैं तो प्लान चेंजिंग के बारे में एक उद्देश्य लेके चेंज की रिक्वायरमेंट है. लाइक जब हमारे पास प्रोटेक्शन होते हैं, प्रोटेस्ट चलाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इम्पैक्ट पर, सो वो क्या है, एक प्लान्ड है. लाइक सती प्रथा को बंद करने के लिए मूवमेंट आए, प्रोटेस्ट हुआ, सो वो सब कुछ क्या था, एक प्लान था. सो उनके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है. So endogenous development is the main focus of development planning effort. Developmental planning is usually done from perspective of government agencies. Socialists have constantly reminded government agency to extend the notation of planning from the idea of planned economy to that of developed society. देखिए अब सोसाइटी में कुछ इकोनॉमिकल चेंज लाना है या फिर मेजर चेंजेस चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्लान्ड आइडिया होता है बाय अवर गवर्नमेंट. नाउ चेंजेस एम्पिरिकल रियलिटी. Sociology has its roots in the impact to understand the process of social change. In the recent decades, there have been attempts to analyze social change in terms of specific models which are based upon experience of change in particular societies. Attempts are being made to construct these models within a broader theoretical framework. Sociologists are focusing on questions relating to change, the direction and rate of change, and the factors in the social change. Now regarding the rate of change, it has become a popular observation that there is an acceleration of social and cultural change in modern time. देखिए अब चेंज की बात करते हैं तो हमारे आज के टाइम में कल्चरल चेंज भी हो चुका है, सोशल चेंज भी हो रहा है. लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं चीज़ों को, जिससे जो चेंज है वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो पाता है. आज की डेट में लोग एजुकेटेड हैं तो उन्हें पता है व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम, सो दे आर फ्रिक्वेंटली एक्सेप्टिंग गुड थिंग्स, सो दे आर बीइंग अ फ्रिक्वेंट चेंज. सो अ चेंज फ्रॉम वन सोर्स may lead to sequence of changes. Technological, agriculture, industrial, ecological changes tend to affect the social structure. टेक्नोलॉजी ने, एग्रीकल्चर ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी हमारे सोशल लाइफ के अंदर आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं. नाउ इंडिया embarked on the progress of planned socio-economic development after independence. So इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे बेसिकली प्लान बनाए गए for these type of changes. So here is a planning for socio-cultural development. प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए गए, अर्बनाइजेशन के लिए प्रोग्राम चलाया गया. नाउ इंडिया हैज अडॉप्टेड अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट विच इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी.
सो इंडिया ने जो इसके लिए पाथ को चूज किया है उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. ऑन द अनदर हैंड इंडिया हैज एनकरेज प्राइवेट बिजनेस एंड इंडस्ट्री. आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस और इंडस्ट्रीज हैं. सो उनकी वजह से भी हमारे बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर में इफेक्ट पड़ता है. रेलवे एंड पोस्टल सर्विस आर मोस्ट अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर. आज की डेट में जो रेलवेज हैं और पोस्टल सर्विसेज हैं इज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर. वो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के पार्ट हैं. रूरल डेवलपमेंट के लिए सो मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी. सो उनसे क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो रूरल लोग थे वहां में भी डेवलपमेंट होने लगी. सो वहां पे भी आज की डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं. पंचायती राज है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन होता है, एक टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाए जाते हैं सो दैट कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव एजुकेशन एंड हर किसी का डेवलपमेंट हो पाए. सो कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं. पंचायती राज है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टारगेट ग्रुप प्लानिंग होती है. सो प्लानिंग 5 years प्लान चलाए जाते हैं. सो सोशल प्लानिंग represent an important factor in social change in India. It has been described by some as a movement towards socialism. Social planning in India has aimed at drawing the mass of people into a process of relational and deliberate transformation of their social life. So the Indian Constitution of 1950 defined the purpose of independent India's political system as being to establish social, economic and political justice, liberty of thoughts, expression, belief, worship, equality of status and opportunity and fraternity. बेसिकली जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया हर किसी को कोई भी लैंग्वेज बोलने का हक है, पूरी लिबर्टी है, कोई भी धर्म अपनाने का हक है, इक्वलिटी, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना, वो सारे के सारे हक दिए गए. सो द टू मेन्स एम एज आउटलाइन बाय फर्स्ट 5-year प्लान आर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. सो उसके खिलाफ जैसे हमें पता है हर 5 साल में 5-year प्लान आते हैं. तो जो फर्स्ट 5-year प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाया गया उसने 2 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया. सबसे पहले इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और सेकेंडली जो इन इक्वलिटी है इनकम की उसको रिड्यूस करना चाहिए. सो अ केयरफुल synchronity of aims and objective of each and every 5-year plans reveals the emphasis on growth, equality and social justice. The second plan emphasized the achievement of socialistic pattern of society. The third plan aimed at securing a major advance towards self-sustaining growth. The fourth plan aimed at raising the standard of living. Fourth plan स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज अप करने की कोशिश की गई. जो फिफ्थ प्लान था उसने सेल्फ रिलायंस एंड अडॉप्शन मेजर फॉर राइजिंग द कंजम्पशन स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उसकी कंजम्पशन के ऊपर वो कैसा उनके अडॉप्शन के ऊपर मेजर करने पे ज्यादा ध्यान दिया गया. सिक्स जो हमारे पास आया शॉर्ट कमिंग ऑफ प्रीवियस प्लान. जो हमारा 5-year प्लान था उसकी जो शॉर्ट कमिंग थी उसको रिमूव किया गया. 7th प्लान के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हर किसी को जॉब मिले उस पे ध्यान दिया गया. दूरभाषी describe India's approach to planning the following manner. India's plans are comprehensive and balanced and include both public and private investment. So दुभाषी जो एक हमारे पास सोशलिस्ट हुए हैं उन्होंने इंडिया के बेसिकली जो अप्रोचेज है उन पे कुछ लिखा और कुछ ऑब्जर्वेशन डाली. सबसे पहला था जो इंडिया के 5-year प्लान्स होते हैं बहुत कॉम्प्रेहेंसिव होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट दोनों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं. द इंडियन अप्रोच कैन बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक प्लानिंग एज डिफरेंट फ्रॉम टोटलिटेरियन प्लानिंग.
India's approach to planning is aimed at setting up socialistic pattern of society. So, social planning has been an important factor in social change in India since independence. A detailed examination of progress of social change in the India has to include a multitude of interrelated factors apart from planning which have shaped the content, rate and direction of change. Changes in the social structure, institutions and relationship which came in wake of British rule has often been described under the following broad categories: change in caste, change in rural and urban life, change in position and role of women. देखिए कास्ट में चेंज आना चाहिए, जो रूरल और अर्बन लाइफ है इनमें चेंजेस हो चुके हैं और जो वुमेन की जो पोजीशन थी आजकल उसमें भी चेंजेस आ चुके हैं. सो the striking feature related to change in caste system in that caste activity have increased and widened into many spheres like education, economy and polity. आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं. लाइक एजुकेशन में चेंजेस है, आज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो चुकी है, पॉलिटिकल चेंजेस भी आ चुके हैं. सो इन सर्टेन केस द ओल्ड एसोसिएशन बिटवीन द कास्ट एंड ऑक्यूपेशन हैज ब्रोकन डाउन. The gradual transfer of power from British to Indian has been accomplished by growing activity of caste in politics. So, industrialization and urbanization are the polito-administrative change that have taken place since independence has affected various aspects of rural and urban life in India in many ways. देखिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, उनकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत मेजर चेंज आए. लोग एजुकेटेड होने लगे हैं, इवन उनको पता है उनके लिए क्या बुरा है और भला है. लोग माइग्रेट कर रहे हैं विलेज से सिटीज की तरफ, और जो जॉइंट फैमिलीज थे आज की डेट में वो सेपरेट फैमिलीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने लगी हैं. सो अकॉर्डिंग टू वाइसिंग और स्ट्राइकिंग consequence of development planning activity in India is emergence of different category of powerful middle class in both rural and urban India. So according to Vaising वो बोलते हैं कि जो different activity में consequences हो रहे हैं वो different powerful middle class family की emergence से हो रहे हैं from both rural and urban family. वो middle class जो होते हैं वो participate करते हैं industrialization में, entrepreneurship में. So these all are the changes. So socio-religious reform movement of 19th and early 20th century national movement for independence and constitutional provision have had a significant impact on the status and role of women. देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, प्रोटेस्ट आए जिन्होंने भी हमारे सोशल लाइफ के ऊपर बहुत इफेक्ट डाला. लाइक सती प्रथा, बाल विवाह और डोरी सिस्टम, उन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट चलाए गए. और जो एक 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गए. राजा राम मोहन राय ने चलाया पर्दा प्रथा को बंद करने के लिए, सती प्रथा को. सो उन मूवमेंट से भी हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस आए. सो द पॉलिटिकल एंड प्रोग्राम्स ऑफ planned social economic development attempting positive action to improve and widen opportunity for women to participate in socio-economic process to development in more effective manner. So, development contributes greatly to special focus on women in planning process since the 1970s. The UN Declaration of 1975 as International Women's Day and 1975 and 85 as the Women's Decade can be considered as important landmarks in matter of pretending to women. देखिए अब UN डिक्लेरेशन ने, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 1975 को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, और 1975 टू 85 के बीच में जो डिके था उसको बेसिकली वुमेन्स डिके में डाला गया. सो उनसे भी दिखाई दिया कि एक बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है वुमेन की पोजीशन में. सो वी मस्ट रिमेंबर दैट वुमेन डू नॉट
constitute a homogeneous category in India. Groups of women not only differ from one another in terms of physical and demographical characteristics but also in the behavior pattern determined by the factors like region, caste, class, religion, etc. Only certain section of women like the upper and the middle class and the class have benefit by these programs. Now question for all of you people. At the very beginning, my first question is, what are the two factors which sharpened the focus on women's participation in development since the 1970s? List the specific objective of 9-5 plan. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.